नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राजनीति नहीं, एविएशन और आर्किटेक्चर था पहला सपना, नवेद मियां। रिपोर्ट आफाक अहमद खां, रामपुर, चेन्नई स्थित एमएसआई एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने कहा कि उनकी पहली रुचि राजनीति में नहीं बल्कि एविएशन और आर्किटेक्चर में थी। उन्होंने अपने छात्र जीवन से लेकर सक्रिय राजनीति तक के सफर को साझा करते हुए बताया कि परिस्थितियों के कारण उन्हें न्यूयॉर्क से रामपुर लौटकर राजनीति में आना पड़ा। कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया और नवेद मियां ने रामपुर की ऐतिहासिक वास्तुकला पर भी अपने विचार रखे। So the main darbar hall is as big as, maybe a little bigger than this hall. They wanted to make it very majestic, and they had customized chandeliers from southern Germany to be put up. And chandeliers in those days the frame was metal, it was not wood, it was metal. So now the problem was how to calculate the structure of the ceiling, how much reinforcement to put so that it could take the weight of the set of 5 chandeliers. What they did in that time, so through a pulley, a heavy duty pulley, they raised an elephant on top and made it walk to see if there were any cracks in the ceiling. Of course it was heavier than the load of the chandelier. And once they discovered that the ceiling was safe for that weight, then the chandeliers came and then people put them. Even the bulbs in those chandeliers are of 1904, which are still working today. Yeah. Thank you. That is Civil engineering in it, because the mathematical part of calculating the loads taken by the beams or the steel structures, everything that was related to that, and we had to prepare construction drawings, which were very, very difficult, and by hand. Of course, we used the rotary pens and all that. These are all things which you, I think, consider. I don't think many of you must have even heard of them. But that is how